यहाँ जब आप अच्छी लेंथ को काफी बुलंदी से हिट करते हैं, क्योंकि तवील कामत फास्ट बॉलर है आसिफ महमूद, तो आज अगर सुबह से मुआवजा किया जाए इस वक्त का, तो ऐसा लगता है कि किसी और ही पिच पर मैच हो रहा है। सुबह जब पुरानी गेंद के साथ सरफराज अहमद और फवाद आलम के सामने सेंटर पंजाब के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, तो ऐसा लगता था कि ये बॉलिंग रन आउट के इंतजार में हो रही है। लेकिन फिर जब नई गेंद आई तो सेंट्रल पंजाब पर मतला फिर से साफ होने लगा और मोहम्मद अली ने बड़ा उम्दा और जारहाना स्पेल किया। उनकी गेंद पर एक कैच भी गिरा, लेकिन उसी ओवर में उन्होंने जाहिद महमूद को फिर बोल्ड कर दिखाया। तो आज के दिन में अब तक 8 विकेटें गिरी हैं। कल 9 विकेटें गिरी थी, पहले दिन 6 विकेटें गिरी। ज्यादा हिस्सा खेल का बॉलर्स के नाम रहा और जिस चीज की कमी महसूस की जा रही थी सिंध की बॉलिंग लाइन में, उसको आज भरपूर साबित कर दिखाया आसिफ महमूद ने। ये देखना होगा कि जाहिद महमूद जो हैं इनको कब लाया जाता है, क्योंकि उमर ने 7 ओवर्स कर लिए, मीर हमजा पहले ही 6 ओवर्स करके जा चुके हैं। ये मोहम्मद अली जिन्होंने आज तबाहकुन स्पेल किया। पिछले सीजन में भी ये तेज बॉलर्स में इन्होंने सबसे ज्यादा विकेटें ली थी। लेकिन दूसरे एंड पर इनको उतनी मदद नहीं मिली है। सेंट्रल पंजाब के जो नए हेड कोच आए हैं उनको अपने वसाइल के मुतालिक जाहिर है कि आगे चलकर सोचना होगा। अभी वो पूरी तरह आगाह नहीं होंगे, खिलाड़ियों के टैलेंट से भी उन्हें कुछ वक्त लगेगा, कुछ मैचेस लगेंगे। तो क्या दूसरे एंड पर उमर की जगह मीर हमजा को अब वापस लाया जा सकता है अयाज? देखने में तो ऐसा ही महसूस हो रहा है। मीर हमजा खुद को वार्म अप कर रहे हैं। अच्छी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा, नबीतुली बॉलिंग का मुजाहरा आसिफ महमूद की जानिब से जाने दिया इस बॉल को तैयब ने। फवाद आलम वापस आ गए हैं मैदान पर। आज शानदार सेंचुरी स्कोर की, 42वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी बनाई फवाद आलम ने। और ऑफ स्टंप के बाहर स्क्वायर ड्राइव किया और 4 रन मिल गए। गेंद बैट्समैन की तवक्को से ज्यादा फाइन गई, लेकिन नतीजा वही जो कि ख्वाहिश थी तैयब ताहिर की। इनका फेवर्ड एरिया है, कलाइयों को भी इस्तेमाल करते हैं। 18वें ओवर का खात्मा हुआ इस तैयब के चौके पर, 35 पर थी। अपना साउथ देख लो, वो कह रहा है एंड का गाइड का। मोहम्मद उमर को अपनी बॉलिंग जारी रखना है पवेलियन से। और सवाल यही है कि जाहिद जब बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो उनको किस एंड से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जो आसिफ महमूद हैं उनके 5 ओवर्स हो गए। मीडिया सेंटर एंड से ही ज़्यादातर स्पिनर्स ने अब तक बॉलिंग की है। क्या उन्हें पवेलियन एंड से अब लाना चाहेंगे या फिर मीडिया सेंटर एंड से ही जो आसिफ महमूद हैं उनको हटा लिया जाए, कोई देर उनको आराम दिया जाए, क्योंकि वो भी नए आए हैं मंजरनामे पर। पहली इनिंग्स में अच्छा स्पेल किया था पहले दिन जाहिद ने। शानदार दिफा
कासिम अकरम का। बिजी प्लेयर है कासिम अकरम। या इनका जो फुटवर्क है वो फैसला कुन है और देखिए बिल्कुल पॉजिटिवली आगे जाते हैं और शशोपंज में नहीं रहते। किसी तरह के एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है। स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं जो कि फुकदान है आजकल के जो पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं। देखिए एतमाद के साथ इस गेम को जाने दिया। बहुत ही अच्छे फील्डर भी हैं, ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं। तो इनमें वो तमाम हम कह सकते हैं कि वो तमाम सलाहियतें हैं जहाँ अब जाहिर है कि टेम्परामेंट जो है वो जूं जूं ये बड़ी क्रिकेट खेलते जाएंगे वो और बेहतर होगा। बड़ी इनिंग्स बिल्ड करना और मैचों को उनके अंजाम तक पहुंचाना वो एक जो गुण है अभी उस पर सवाल रहेगा। शानदार बैकफुट पंच। कासिम अकरम की अभी तक 14 गेंदों ने का सामना किया और बड़ी शानदार एक मत अमली रही है उनकी। बाहर वाले बॉल को नहीं छेड़ रहे। जो पहले बैटर्स ने गलती की है वो गलती दोहराना नहीं चाह रहे कासिम अकरम। ये अच्छा लग रहा है। मीर हमजा सीनियर बॉलर हैं, वो मुस्तकिल उनका रब्त है मोहम्मद उमर के साथ जिनने बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली हुई। एक और शानदार शॉट, एक और चौका, आला कवर ड्राइव कासिम अकरम का। फुटवर्क मिसाली और टाइमिंग जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। लाजवाब शॉट, किताबी शॉट। कासिम अकरम की जानिब से हेड स्टील, फ्रंट फुट का बेहतरीन इस्तेमाल, नहायत ही शानदार कवर ड्राइव। शॉर्ट कवर पर एक कैचर को लाया गया है। कवर ड्राइव की इसी ये देखा गया कि ये शौक से खेलते हैं कवर ड्राइव आगे बढ़कर, लेकिन जाने दिया कासिम अकरम ने इस गेंद को। एक और अच्छा ओवर कासिम के लिए 39 पर 3। अब्दुल्ला शफीक के अलावा वो बड़ी इनिंग्स नहीं है जो इनके स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं सेंट्रल पंजाब के, उनमें से किसी ने अब तक निस सेंचुरी नहीं बनाई है। पहली इनिंग्स में 7वें नंबर पर आकर और छठे नंबर 8वें नंबर पर आकर 70 रन की इनिंग्स खेली थी आमिर यामीन ने। लेकिन जो इनके स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं वो मुश्किल में रहे। तैयब ताहिर जो है उनको चोट आई, ये गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ कट हुई और सीधी जाकर रान पर लगी। यहाँ तैयब ताहिर की चोट आई है इसलिए उनको मदद की जरूरत है। फिजियो को मैदान पर बुला लिया गया।
3 खिलाड़ी आउट हुए हैं इस इनिंग्स में। आसिफ महमूद तीनों बार कामयाब थे। ये देखिए उन्होंने तहोबाला कर दिया स्टंप्स को। एक बार फिर ऑफ स्टंप गवाई सेंट्रल पंजाब ने। और इससे इससे खुशकुन नज़ारा नहीं हो सकता फास्ट बॉलर के लिए कि वो टॉप ऑर्डर बैट्समैनों की विकेटें गिराए। क्योंकि इस तरह के जो मनाजिर हैं जब आपके 9, 10, 11 नंबर के बैट्समैन फास्ट बॉलर का सामना करते हैं तो वो हम देखते हैं। लेकिन ये पहले 3 बैट्समैनों की इस तरह से विकेटों को उड़ा देना ये भी एक गैर मामूली एक कारनामा है एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जो डेब्यू कर रहा हो। हम आसिफ महमूद ने अपना लोहा मनवाया है आज, और आबिद अली जैसी बड़ी विकेट, और 7 को तो बेबस करके रख दिया उन्होंने जिस तरह उनकी विकेटें उड़ाई हवाओं में। और मैच समरी निहायत ही शानदार 232 रन। आज दूसरी इनिंग में कमी का एहसास हुआ होगा पंजाब को। अब्दुल्ला शफीक के ना होने से 3 विकेटें जल्दी लौट गई पवेलियन में। फवाद आलम के 127 रन की बदौलत शानदार 368 रन स्कोर बोर्ड पर जमाने में कामयाब हुई सिंध की टीम। निन्यानवे रन की सबकत सेंट्रल पंजाब को मिली है। 7 विकेटें दूसरी इनिंग्स में उनके बाकी हैं और इस खेल में अभी बहुत कुछ बाकी है। एक्शन, खेल तमाशा और इस वक्त जो कैट एंड माउस गेम है वो मैदान में चल रही है। ये आबिद अली अच्छा लग रहा है इनको मैदान में ये वापस आए हैं क्योंकि पिछले साल क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलते हुए अपनी बैटिंग के दौरान ही इनको सीने में तकलीफ हुई थी। आज वर्ल्ड हार्ट डे है तो हमारी नेक ख्वाहिशात जो है वो साथ हैं उन सब के साथ जिनको ये आर्जा लाहक है या वो निमट रहे हैं इस सूरत हाल से। हम सबको अपने दिलों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने, और निहायत ही खुश और दूसरों के दिलों को भी। शानदार कोचिंग स्टाफ। आते ही 2 हम पल्ला टीमों को आमने सामने। इस बार बड़े एतमाद से खेला और यहाँ ये बड़े इत्मीनान की बात होती है किसी बैट्समैन के लिए जब वो किसी गेंद को डिफेंड करे और गेंद जो है पिच पर पहले बल्ले के मिडल में लगे फिर बिल्कुल आपकी नजरों के सामने पिच पर गिरे तो उससे आपके एतमाद में बेपनाह इजाफा होता है। क्योंकि अगर आप डिफेंड करते हैं और गेंद जो है पिच से दूर गिरती है या आपसे दूर गिरती है तो उससे आप सोचने पर मजबूर रहते हैं। तैयब ताहिर अपने करियर के उस अभी दौर में हैं जहां इनको अपनी दिफाई बैटिंग पर अभी काम करना है क्योंकि ये क्रिकेट में जो बैटिंग है ये एक ऐसा हिस्सा है खेल का जिसमें 70% इसका ताल्लुक दिफा से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इस पर तफसील से बात करेंगे यासिर हमीद और अली यूनुस अगले कमेंट्री स्टेंट में 39 पर 3।
Bowling change from pavilion end. Interestingly, Zahid Mahmood is brought into the attack. Sindh is feeling good, having these 3 wickets early on. Inside in this second inning, they've been brilliant. The way they've bowled, they've stuck to the task. They've been disciplined. They've been consistent. They've done a wonderful job. And now, suddenly, they're in the commanding position in this game. And most importantly, Ali, they have learned their lesson from first inning. They bowled in the right areas, right length, not tried hard, too hard. And also, they've been helped by some extra cautious batting by Central Punjab batters. I think there were many deliveries that they could have easily driven for a few boundaries, but they were extra careful. I think they missed out on many opportunities that were provided to them to get those boundaries, but they didn't. Definitely bowlers have bowled well, but some of those deliveries had to put away. You can see from Qasim Akram's approach. Since the time he has come in, he's looked positive. He's looked to drive. He's looked to attack back. And that's the way to play 4-day cricket. You have to be positive with your frame mind. You have to play positive. Don't bog down yourself. Otherwise, you'll have a good ball any day, any time. It's not a simple game. It's a difficult game. You have to learn, especially this red ball cricket. It's quite difficult. You got to be very skillful. You got to be very patient. You need to be a keen learner. This is what Sindh is showing us in this inning, that they've learned from their mistakes. Positive means you have to respect the ball, good ball, and you have to put away a bad delivery. You cannot block the over-pitch delivery in 4-day cricket. You have to send him to the boundary. And on this occasion, that wasn't a back foot delivery. He was lucky that ball didn't kept low. I could have easily got into the pads. Got to be very careful playing Zahid Mahmood. That's better. That's more like it. Good cricket all round. A 41 for 3. A question for you, Yasir Hamid. You've been the captain at this level for many years. You've been a fantastic batter yourself. Where do you see this match going from here on? Central Punjab leading by 101 run, almost a day tomorrow, one session of today. Where do you think it is going? I think only one good partnership can bring back Central Punjab into commanding position, because anything over 220 won't be easy on the last day. So it is interesting game. Again a quick run and alive for both teams. Now after this performance from Sindh, they would think they are back in the game, and they are rightly so. If a couple of wickets from here, they can be on driving seat as well. But anything over 200, Sindh has to bat very good to get that target. Absolutely. I agree. Oh, how good was that from Mir Hamza? Superb. That kicked on. Mir Hamza, you're brilliant. As a batsman, when you get these type of deliveries, then you have to regather your thoughts. Again, Qasim Akram is a good player. He left the ball well. His bat didn't hang. That was good sign from him. Otherwise, that was clearly nicked. Look at those numbers. He's into the 8th over, just given away 9 runs. He's kept things tight.
from one end. Again. Oh, that is magical. That is superb. That is fantastic by Mir Hamza. Mir Hamza showing his skills, showing his class here. What he is capable to do. Straight ball, and after the seam, it went away. How do you play this, Yasir Hamid? The way he's playing, I think he beat in with style. He's not ugly. Those two deliveries are the good deliveries. One of the few best deliveries in this match. And again, 3 in a row by Mir Hamza. He's been unlucky that on these 3 occasions he's unable to get that edge that Yasir Hamid was mentioning. The good thing about Qasim Akram batting that he is playing in swing. That's why his bat is not going away from these deliveries. These 3 deliveries are top deliveries. Any batsman can be. Yeah, the footwork also. Just Yeah, stood on his he line. doesn't have a back and cross movement. But his head is still. This is a good thing. Oh, how did that miss? Oh, that is superb bowling by Mir Hamza. He's playing around with the batter. 3 deliveries leaving it and suddenly one just jacked back in. How unlucky he is not getting the wicket in this over. I do not believe this. Everyone in this ground is enjoying this magical over from Mir Hamza. Is so unlucky not to get wicket in this over. Look at this ball. Just pass from 4th stump. If there would have been a 4th stump, it definitely hit that. How did that miss that off stump? It should have got that top of that off stump. Mir Hamza, you're superb. Won't you give marks to Qasim for this left? What I a left won't. that was. I won't. Just nearly missed his wicket. Wonderful over. That is the over of the highest quality by Mir Hamza. Unlucky not to get the wicket. It's 42 for 3. Oh, what a wonderful over. I think we've been entertained by that over from Mir Hamza. Look at that again. This was the first one, the single taken, and then came Qasim Akram. And look at that line and length, consistently bowling at that danger line and length. I have no idea how did Qasim Akram survive this one. Nearly got that wicket. Spot on, Mir Hamza. You're excellent. Excellent cricket. Excellent bowling. You have to give marks to the batsmen as well. He didn't panic at all. That was good thing. And Mir Hamza. Brilliant. Brilliant. It's just the beauty of the game. In the morning, who would ever thought that Central Punjab would dominate? And then now Sindh is dominating. Oh, be careful. Be careful with that footwork. Tayyib Tahir is going on to the back foot. That is not a good idea, playing somebody like Mohammad Zahid. Sorry, Zahid Mahmood. It's happening for the bowlers at the moment, and one mistake can be costly here for Tayyib Tahir and for Central Punjab. Though he has a quick hands, but he has to play on the front foot. He looked to play on front foot. Don't go on back foot. Such a pressure game. When you've got short leg in place, there's slip. Everyone around him. Zahid Mahmood bowling a brilliant spell. It's not easy, I tell you. Oh.
Every delivery, you're getting some action. Yeah, the close catching is coming into play, and my advice to Quaid-e-Azam, come on, wake up, guy. It can be another test for you in the slip. Only if you wish you could be there in the ground at the moment, Yasir Hamid. I know you've been brilliant in that slip cordon yourself. That is really nice. That is what we can hear from Sarfaraz Ahmed. He's right behind his young bowler. That is a fantastic passage of play. Cricket of the highest quality from both ends. There's brilliant bowling, there's survival, there's everything happening. Just don't want to see a catch drop. I don't want to see that. That's an easy length. Well played. Forty-two for 3. Yeah, you can have a long discussion now, Abid Ali. It's not the type of shot that you associate with somebody like Abid Ali. He's better than that. Played away from the body, was in a hurry. Having a word with the trainer, with the Estonian, Abid Ali. That's the culture. So the culture is changing. Okay, ladies and gentlemen, get ready again. Mir Hamza is back. Bowled a brilliant over. Repeat the performance. A little fuller this time to start off the over. Fuller tried to punch through the covers. He has to be patient. Patient there, Qasim Akram. Mir Hamza is bowling with his full rhythm here. Anytime he can get wicket. Back at it again. That wonderful length from Mir Hamza. He's been around for years and years, taking wickets, performing. It's never easy, Yasir Hamid, when you're performing for years and years and you don't get a call up from national side. It's very difficult to get yourself motivated for all these years. So you've got to give it to Mir Hamza. Yeah, definitely. And you have to give credit to him. But the good thing, he played county cricket last year, and that motivated him again. In the air. That's through. Will run away. Does it have enough legs? It does. Good shot, good positive intent by Qasim Akram. That's what I'm talking about. If it's there to hit, go for it. Don't bog down too much. Good positive cricket from Qasim Akram. Good footwork as well. Good hands. He has good hands. Yeah, at least the feet are moving now. What can Mir Hamza do now? Better. Good defense. Good solid defense shown by Qasim Akram. This is a good battle, I tell you, between a youngster and a veteran. Won't exactly call him a veteran, but a experienced one, Mir Hamza. We're seeing some quality cricket. Absolutely. Mir Hamza was spot on in the last over, unlucky to get an edge. But then Qasim Akram on counter, good shot in the cover and nicely defense. But this time he has been beaten again with a pitch-off delivery. You really have to be very unlucky not to get a wicket. Mir Hamza has been wonderful with that spell of bowling this couple of overs. Look at this one. Length with the angle, leaving the batter. Just try to fetch it outside the off stump.
And also he was looking to play the ball. But in the end, he decided not to. Edge, oh, he's dropped it. That's what I had the fear of. Those drop catches that went straight to Saad Khan. Just dropped it. Oh my God, you wasted the hard work from me, Ramza. You cannot do it. You cannot do it when ball is bowling like this. Everyone is thinking anytime he will edge the batsman. And look at the slip fielder here. He thinks he will not have the ball. How can you think this? You have to be extra conscious when the ball is bowling like this. Anytime you will get edge. 46 for 3. I have a feel for this man on your screen, Mir Hamza. He's bowled his heart out. He's bowled an excellent spell, consistent spell. He worked it up on Qasim Akram. Got that edge. Saad Khan spilled it out. Full toss, punished. Wonderfully. 4 runs for Tayyib Tahir. And then this full toss by Zaid Mahmood. Losing the concentration, discipline here. Zaid Mahmood giving a gift. And putting off that pressure straight away. Come on guys, you cannot do this. Good comeback. This is the area he has to bowl. Right on money. Excellent cricket going on at Rawalpindi Cricket Stadium. This is the first game of domestic season 22-23. And what a wonderful game we have in our hands. It's Central Punjab taking on Sindh. Central lead by 110 runs. They're into their second inning. And we're witnessing some quality bowling with some good defense, but some average fielding. That is what I mentioned in the last over. That is what I don't want to see. Some exciting cricket. We don't want to see a catch drop. We'll have a look at that drop catch again by Saad Khan, and I'll ask Yasir Mead, who's been a wonderful slipper himself, that where did Saad Khan go wrong? Aram se, says Sarfaraz. Yeah, let's have a look at it again. And I'll ask Yasir Mead, where did Saad Khan go wrong? Hard hands. I think hard hands. It was on his left, and I think that's his strong hand. He's left-hander. That should have been taken. But in the slip fielder, in the slip, you field with belief because catches come sharply to you. You first visualize that I'm in slip. The catch will come, and I'll take it. You have to visualize every now and then. So when you get the ball, it's easy for you. But if you don't think the catch will come to me, then you'll be in trouble. 51 for 3. It's time for Tayyib Tahir to face Mir Hamza. Last couple of overs, it was Qasim Akram. This is a challenge for Tayyib Tahir now. What's going to happen, Yasir?
It will be very interesting. For my liking, Tayyib Tahir will be will connect the ball at least, and that's what happened. A little late in your prediction, a little late. He already did that. One run, he's off strike. The young Qasim Akram is back on strike. He has connected the ball, but the good thing is it didn't want to slip. We give it to you, Yasir Ami. That's all right. Hamza into his 10th over. His bowling spell that we'll remember for a long time. Edge doors! Oh, every time. Come on, slippers, be ready, because it's on cards. Anytime you can be tested again. Got But me excited. I'm liking the intent of Qasim as well. Look at him. Look at him. Yep. Let it go. It was good delivery, but I would say well played by Qasim Akram. Yeah, in my opinion, he's probably looking for that in-swinger, that surprise delivery maybe that Mir Hamza has in his armory. Oh! Huge appeal. Not out says umpire. Even Yasir was very loud with his appeal, but that was probably missing that off stump. I think height may be a problem, but for me it was very close. Pitched in line. Oh my. That was close thing. Yeah, the angle probably taking it away from that off stump. It's a close one. You can't be certain. Umpire is the final judge. He judged it that it's not, and we will go with him. It was very close call. Driven nicely. This is better right from the middle of the bat. It's such a huge learning for Qasim Akram. Playing a fantastic spell as a batter. He must learn a lot from this inning. This is a defining moment of the match, I must say. If they give wicket to Mir Hamza here, pitched in line and hitting the knee roll. It came back, but it straightened up. That was a very, very close shout. You can't be 100% sure, but it looked very close. One drop catch, one LBW shout. He survived both. Let's see what happened next. This is the last ball of Mir Hamza's brilliant over. Once again, right on money. 52 for 3. What a spell of bowling. Mir Hamza, you entertained us all. The flag is flying high. 4 bowlers used. 3 wickets for Asim Mahmood. Mir Hamza 10 overs for 14 runs without a wicket. That numbers doesn't justify his contribution in this inning. He's bowled brilliantly. He's been consistent. He's consistently beaten Qasim Akram. A drop chance, an LBW appeal going against him. Just everything happening in this game of cricket. Superb. It's very important from the other end. The pressure is on. It just shouldn't happen that runs start leaking from the other end because Mir Hamza is bowling brilliantly from one end. You have to keep the pressure on from the other end. This is the point. Absolutely right, Ali. If you leak runs from the other end, you lose the momentum. In the air, in the gap. 4 runs for Tayyib Tahir. Exactly what we were mentioning. Don't leak runs from this end.
It was edge, but went quickly from the right side of Quaid-e-Azam. Yeah, every time the ball goes towards that third boundary, the fielder has to go all the way towards the stands and get the ball, because they don't have the facility of the ball boys here at first class level. So it takes a bit of time for the bowler to go all the way towards the stand and get the ball. But it has given us the time. Look at that. He has to go all the way around towards the gate and then again towards the stand. Oh, where did he come out from? Somebody help him, for God's sake. It's under the super sofa. I think this is Saad Khan searching for that ball which he's dropped in the sleep early. Where is the ground staff? He's found one. Is it the same? Is it the same ball? Is it the match ball? It is a practice ball. It's not the same ball. Somebody please help him find the ball. The play is stopped due to that. Mir Hamza is there to help him. It's like playing gully cricket. The ball goes to somebody's cricket. house. Yeah. You go there, sometimes jump over their wall and find the ball from there. So many Corners. times we've done this. Absolutely. Yeah, we can have a look at the action replay and maybe we can find it from here. Where exactly the ball is gone. Let's have a look. Let's keep your eye on the ball. Where it goes. There we go. No. Lost it. Not really covered in that angle. We can have a breather. Maybe in that Severage line. I hope not. Let me tell you, there are a lot of 1, 2, they've got many. They've been searching for it, okay. Next time, we can use the other ball for the next time. That's what we used to think when we used to play cricket. Wonderful, Yasir Hamid. Full of phrases, he's learning. The latest one being, if you dig what? If you dig the ground, eventually you will dig the gold. That's you'll get the gold. That's the latest one from our friend Yasir Hamid. Excellent. Back live. Everything is sorted. We are ready to resume the action. Just on the verge of tea break here. This should be probably the last over before the tea interval. Just survive. Don't get out. Zahid is persistent with his line and length now. Oh, he's offline again. Brush the pad or it was edge. We have to see. Yeah, brush the pad. Leg bias for Central Punjab. 3 run. 3 runs here. Yeah, good running. Qasim Akram was the one who had to come to the danger end. Just drifting towards leg side, no spin whatsoever. Just brush the pad. It's the runs that matters at the moment, no matter how they come. For Central Punjab, they lead by 119 runs. Enjoying this session, Ali? Loved it. Excellent cricket. Driven. Chance! Chance! It has to be out. Oh! Yes. Is that out? Oh, has umpire given him out? Oh my God, what have you done, Qasim Akram? Against the run of play, you've ran yourself out. He just ran. We're just waiting for the umpire's final decision, maybe. He's just holding up. Maybe Sarfaraz's hands did hit wickets before the ball came. It's going to be very interesting. When you have to get out, you get out like this. Look at that. He just ran. Qasim
Tayyip Tahir said no. He backed off. I think that's out. Well done, Sarfaraz. What a disappointing way to end this session. Qasim Akram, just on the brink of tea break, has ran himself out of 13. He was given an earlier life when the catch was dropped. And look what he has done to himself. There is no point of running. There was no need of that. Not at all. Not at all. But Sindh team will be very happy with their performance and with their plan, especially Mir Hamza. Maybe he come back and he gets some wickets. But absolutely brilliant. Look at the disappointment on the coaching staff, and rightly so. They've lost the wicket on the very last delivery before tea interval. They were looking fine, they were looking good, but just at the end, they've made Sindh come back in this game, courtesy to that wicket of Qasim Akram, who ran himself out. Enjoyable session. Some good bowling by Sindh. After 27 overs, they've got 4 wickets. Only 59 runs conceded. Abid Ali first to go on 12. Then Ali Zaryab. Tayyip Tahir is still batting on 23. Mohammad Saad got a knot. Qasim Akram, recent credibility with his run out. Just excellent. Whenever you look at this Sindh Cards bowling unit, Mir Hamza bowled his heart out for his 10 overs, bowled brilliantly, without a wicket though. Mohammad Umar was consistent also, he couldn't get a wicket. Zaid Mahmood without a wicket, but it was Asif Mahmood's 3 wickets that really dented Central Punjab chances, and they're now struggling at 59 for 4. Yeah, let's have a look at what happened in this session. Mohammad Umar started off, Ali Zaryab looked good with his defence. Abid Ali was with him, but it was the line and length. It was this over from Asif Mahmood rattled the stumps of Ali Zaryab. Then Abid Ali played a very careless, casual shot to lose his wicket. This was a wonderful delivery. Runs, Qasim Akram looked positive, played a few drives. Tayyip Tahir also with him. Yeah, and this spell was brilliant by Mir Hamza. Tayyip Tahir with few of his strokes, and this is the last man got out, run out, nicely throw by Asif Mahmood on mid-off. So that's how the match is poised at the moment. Central Punjab 428 in reply, Sindh scoring 368, and now Central in their second inning are 59 for 4. They lead by 119 runs. It's time for tea here at Rawalpindi Cricket Stadium. We'll take a breather. We'll see you in about 10 to 12 minutes.
एक बार फिर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से हाजिर हैं जहां सेंट्रल पंजाब और सिंध का मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। आज तीसरा दिन है और आखिरी सेशन का खेल शुरू होने को है। आबिद अली 12 रन बना सके, अली जरियाब ने 7 रन बनाए, साद और कासिम अकरम भी उसके बाद चलते बने। इसलिए सेंट्रल पंजाब की टीम इस वक्त दीवार से लगी हुई है। 59 रन पर ये 4 विकेटें गिर चुकी हैं और 3 खिलाड़ियों को आसिफ महमूद ने आउट किया अपने बड़े जारहाना स्पेल में जो 5 ओवर्स पर मुहित था। जाहिद महमूद लेग स्पिनर्स को लाया गया 4 ओवर्स के लिए, लेकिन मीर हमजा विकेट के बगैर सबसे आला बॉलिंग कर गए। 428 रन सीपी ने पहली इनिंग्स में बनाए। सिंध ने उसका जवाब दिया 368 के साथ। अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी और फवाद आलम ने सेंचुरी बनाई और सेंट्रल पंजाब की टीम 119 रन आगे है और उसकी 6 विकेटें बाकी हैं दूसरी इनिंग्स में। तैयब ताहिर ये बड़ी उम्मीद है, अभी तक ये 23 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक पहुंच गए हैं, ये अच्छी खबर है सेंट्रल पंजाब के लिए। इनके हाथ में चोट आई थी कल फील्डिंग करते हुए। पहली इनिंग्स के हीरो 232 रन की ये इनिंग्स जो है ये इन्होंने अभी कल ही खेली है। यासिर हमीद आ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में और बड़ा दिलचस्प दिन रहा है अब तक यासिर। जी तारिक भाई, बड़ी ऑब्जर्विंग क्रिकेट हुई है जो लास्ट सेशन में हुई है और एक्सीलेंट जो हम कह सकते हैं आला बॉलिंग की है मीर हमजा ने। अगरचे वो ड्राइव किया, गेंद हवा में थी और ये बमुश्किल हाथ की पहुंच से दूर रही। एक मुश्किल कोशिश ड्रॉप की कवर्स के फील्डर ने। पहला बॉल जो फेस किया था अब्दुल्ला शफीक ने, मर्दे मैदान पिछली इनिंग के 200 रन किए। पहली बॉल एयर में खेल गए और एक अच्छी ट्राई की। अगर हाथ में आ जाता बॉल तो एक ब्रिलियंट कैच होता साइम की तरफ से। उमर बिन यूसुफ का शुमार पाकिस्तान में बेहतरीन फील्डर्स में किया जाता है। अच्छी कोशिश थी उनकी। पहली इनिंग्स में सिंध को कैचेस छोड़ने का नुकसान हुआ था। अब्दुल्ला शफीक का 42 रन पर सऊद शकील ने कैच गिराया मिड विकेट पर। बदकिस्मत बॉलर उस वक्त भी जाहिद महमूद थे। जाहिद की गेंद पर फवाद आलम ने एक कैच छोड़ा था अली जरियाब का। लेकिन आसिफ महमूद ने आज के दिन का कमाल स्पेल किया। एक मौके पर 3 ओवर्स में 3 विकेटें ले गए थे। जी बिल्कुल तारिक भाई, जो चीज पहली इनिंग में ये मिस कर रहे थे दूसरी इनिंग में उस चीज को अप्लाई किया। यहां बॉल किया, आगे की लेंथ रखी स्टंप्स में, ऑफ स्टंप पे बैट्समैन को उन्होंने इनवाइट किया कि वो गलती करें। तीनों बैट्समैन अपनी गलती से आउट हुए। अली जरियाब को भी उन्होंने इसी तरह बोल्ड किया, गैप बना। फिर आबिद अली जो कि अपने जिस्म से काफी दूर खेले, इनसाइड है जो कि बॉल विकेटों को जा लगी। और फिर जो तीसरे आउट हुए बहुत ही अच्छी डिलीवरी पे किया उनको मोहम्मद साद। ये अच्छी गेंद थी, पढ़ने के बाद अपनी लाइन को इसने होल्ड किया। अच्छी दिफाई बैटिंग की है तैयब ताहिर ने। आसिफ महमूद ने अराउंड द विकेट शुरू किया बाएं हाथ के बैट्समैन के खिलाफ। बिल्कुल शिराजा बिखर गया। तीनों बार उन्होंने बोल्ड किया बैट्समैनों को। जी तीनों बॉल बहुत अच्छी लेंथ पे गिरे थे। मेरे ख्याल से पहली जो गलती की अली जरियाब ने वो एक बिग मिस्टेक थी। ब्यूटीफुल बॉल, खूबसूरत डिलीवरी, बॉल पड़ के बाहर की तरफ निकली और तैयब ताहिर को फॉलो करना पड़ा इसको। वो कहते हैं अंदर लाते लाते एक बाहर निकाल दी। यह है इस बार बाउंस भी मिला। इससे पहले बोल्ड किया है इन्होंने बैट्समैनों को और इस बार कॉट बिहाइंड करने के बहुत करीब आ गए थे। दोनों तरफ गेंद को मूव कराने की अहलियत रखते हैं। ये अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर है पीछे रोकने के लिए। अब्दुल्ला शफीक ने जो पहली
गेंद पर ड्राइव किया, उन न्योता दिया था जब गेंद को फुल फ्लाइट के साथ फेंका जाहिद महमूद ने। तो कई बार जो है बैट्समैन जिसने पहली इनिंग्स में बहुत बड़ी इनिंग्स खेली हुई हो तो उसको लगता है कि मैं वहीं से अपनी इनिंग्स शुरू कर रहा हूँ दूसरी भी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तारिक भाई। और ये एक नेचुरल एक फीलिंग होती है बैट्समैन की कि मेरी हर शॉट लगेगी, लेकिन उसको दोबारा अपने शेल में आना पड़ता है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, फील्डर को थोड़ा सा मौका दिया था कि वो उन्हें रन आउट कर सके, लेकिन जाहिद महमूद स्पेल कर रहे हैं जो कि थोड़े थके भी लग रहे हैं। क्योंकि अगर आपने पहली इनिंग्स में सेंचुरी या डबल सेंचुरी बनाई हुई है तो जाहिर है वो जो सरशारी का एहसास है वो जाता नहीं है, वो एक हैंगओवर होता है। ये अच्छा शॉट, कवर ड्राइव है और 4 रन्स मिलकर रहेंगे तैयब ताहिर को। ज्यादातर रन्स ये ऑफ साइड में स्कोर के पीछे बनाते हैं, लेकिन ये लाजवाब था सामने। जी अच्छा शॉट, आगे गिरा हुआ बॉल और सिर्फ अपनी रिस्ट को भी ब्रेक किया। अगर आपने देखा तो हाथ तो अच्छे इस्तेमाल किए, थोड़ा सा रिस्ट वर्क भी था इस शॉट में, जो कि ड्राइव्स में बहुत कम देखा जाता है। 28 ओवर्स के बाद 65 पर 4। ऑफ साइड में अच्छी खासी फील्ड है इस अब्दुल्ला के लिए, इसे डिफ्लेक्ट करने में कामयाब हुए। रन्स मिलेंगे, गेंद नहीं पहुंचेगी बाउंड्री तक, इसलिए तीसरे के लिए भी लौट जाएंगे। रन्स बनाना बहुत जरूरी है सेंट्रल पंजाब को अगर उन्हें इस खेल में अपने लिए उम्मीद रखना है, क्योंकि सिर्फ अगर ये डेड बल्ले से खेलते रहेंगे तो ऐसे में किसी भी वक्त वो गेंद आ सकती है जिस पर आपका नाम लिखा हुआ हो, क्योंकि ये पिच ऐसी है स्पिनर की गेंद भी अचानक उछल सकती है आपके सामने से। जी तारिक भाई, लेकिन अब अब्दुल्ला आए हैं क्रीज पे। अब आप जिस तरह के ये प्लेयर हैं तो आप एक डिफरेंस देखेंगे। एक जो प्लेयर्स खेल के गए हैं और अभी ये आए हैं, तो आप एक डिफरेंस देखेंगे कि इनकी और उनकी क्वालिटी में क्या फर्क है। वाई ही इज गुड, वाई इज गेटिंग रन्स, क्योंकि ये बैट बॉल को जाने नहीं देंगे। तो खासी तेज हवा चलने लगी है। जाहिद महमूद जो एंड है, जाहिद महमूद का वो भी मुख्तलिफ रखा है। पहली इनिंग्स में इन्होंने मीडिया सेंटर एंड से स्पेल करते रहे थे, दोनों दिन फ्लाइट दे रहे हैं और आ रहे हैं पवेलियन एंड से। कम कम हम देखते हैं पिंडी में पवेलियन एंड से स्पिनर्स को बॉलिंग करते हुए। अच्छा बॉल जाहिद का, उतना ही अच्छा डिफेंस अब्दुल्ला का। उम्मीद रखनी चाहिए कि इनकी जो हाथ की चोट है वो मुंतमिल हो गई होगी। आज फील्डिंग करने के लिए नहीं आए थे और बैटिंग करने के लिए भी देर से आए। अब्दुल्ला शफीक कॉपी बुक स्टाइल में इस गेंद का दिफा किया 69 पर 4।
ये अच्छा खेल रहे हैं। तैयब ताहिर जो है गेम को अपने करीब आने दे रहे हैं और एक जो पुरानी एक नसीहत हम सुनते आए हैं बैटिंग के लिए कि गेंद जहां पर स्विंग हो रहा हो वहां उसे जल्दी देखना और देर से खेलना चाहिए। बैट्समैन को वही करने की कोशिश की है तैयब ने अब तक। जी बिल्कुल सब्र से खेले हैं, अपनी शॉट्स भी रोकी हैं इन्होंने और बर्दाश्त की है कुछ। बैकफुट्स खेलने में कामयाब हुए, दूसरे रन के लिए पहुंच जाएंगे। फील्डर को दबाव में लिया था। प्रेशर सिचुएशन को इन्होंने अच्छा हैंडल किया था तैयब ताहिर ने। ये देखिए बैकफुट पे, हालांकि पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, थोड़े ऑकवर्ड हो गए थे, बट उन्होंने मैनेज किया इसको, मिडल करके 2 रन लिए। अच्छी डिलीवरी थी, फ्रंट करने में मजबूर किया क्योंकि एक कवर ड्राइव भी किया था और अगले कदम पर भी खेलने की कोशिश कर रहे थे तैयब ताहिर। देखिए अगर आप इनकी मूवमेंट देखें तो पहले आगे जा रहे थे फिर पीछे आए, बट अच्छा अच्छा कदमों का इस्तेमाल। वेल प्लेड इन द एंड वी वुड से। यासिर, मैं चाहूंगा कि जरा रोशनी डालिएगा। कहा जाता है कि फास्ट बॉलर को जब आप खेलते हैं तो आपको पहले उसकी लाइन पिक करनी चाहिए। स्पिनर जो है उनको आमतौर पर खेलते हुए आप जो है लेंथ को पहले देखने के लिए जाता है। बैट्समैन को पहले लेंथ पिक करना पड़ती है। तैयब ताहिर इससे मुख्तलिफ है। नहीं देखिए, अगर इस वक्त अगर बॉलर को भी देखना चाहिए कि बॉलर कहाँ पे बॉल करते हैं। इस दफा प्ले एंड मिस, तैयब ताहिर ये कट शॉट खेलते हैं लेकिन इस दफा मिस किया इस मौके पे। अगर आसिफ महमूद को देखें तो उन्होंने अपनी सारी बॉलिंग का उनका जो महवर था वो आगे था, पीछे बॉल बहुत कम किए इन्होंने, तो इसलिए तैयब ताहिर पहले से प्रिएम्प्ट कर रहे हैं उनको आगे खेलने का। मेरे ख्याल से ये दिस इज नॉट अ राइट वे। पहले से प्रिएम्पशन नहीं है क्रिकेट। यू हैव टू बी वेरी स्टिल और वेट करना चाहिए आपको। इस बार लेंथ कम थी और बैकफुट पर जाने का मौका मिल गया। 4 रन मिल गए। हालांकि गेंद स्लिप्स के कॉर्डन से गई लेकिन पूरी तरह इख्तियार में थे तैयब ताहिर। इस ओवर में उन्हें 6 रन बनाए, 75 पर 4। कट शॉट खेले और अच्छी बात कि नीचे खेले। लकीर है कि ऊपर नहीं गया बॉल, ये बॉल ऊपर भी जा सकता था लेकिन वो चूंकि इस वक्त 69 बॉलें खेल चुके हैं 35 रनों के लिए, तो हम कह सकते हैं कि वो सेट हो चुके हैं अभी। बैटिंग कार्ड इतना अच्छा नहीं है सेंट्रल पंजाब के लिए। 75 पे 4। देखना ये होगा कि ये दोनों बैट्समैन कहां तक जाते हैं। एक और शानदार शॉट, एक और चौका। इस बार अब्दुल्ला शफीक एक्शन में आए, भरपूर फॉर्म में हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेले इस पूरे मैच में ही। अब्दुल्ला बहुत खूबसूरत शॉट, देखिए स्ट्रेच करके और बॉल की पिच पे पहुंचे और खूबसूरती से मिडल किया इसको गैप में। ये बात तारिक भाई मैं कर रहा था कि
डिफरेंस यहाँ पे नजर आएगा। और मुझे ये शॉट देखकर वो थोड़ा सा मैं पीछे चला गया हूँ आपसे। कोई 17-18 बरस पहले यहाँ टेस्ट मैच हो रहा था, दानिश कनेरिया जो है वो इसी एंड से बॉलिंग कर रहे थे, राहुल द्रविड़ को इसी तरह के स्ट्रोक्स लग रहे थे उस इनिंग्स में। और उसकी जो बड़ी वजह थे वो हमारे साथ है यासिर हमीद। राहुल द्रविड़ एक अजीम खिलाड़ी थे। अगर वो दानिश कनेरिया को खेल रहे तो इसमें मेरी वजह कहाँ से आ गई? यहाँ मोहम्मद शमी जब उससे पहले बॉलिंग कर रहे थे, उससे बहुत पहले, तो यासिर हमीद पॉइंट पर थे, तो कट किया राहुल द्रविड़ ने और यासिर हमीद जो है वो नहीं संभाल सके थे उस गेंद को और फिर पाकिस्तान को बहुत मुश्किल हो गई थी। अभी मैं आपको इसका बताता हूँ हुआ क्या था। राहुल द्रविड़ 70 पे खड़े थे और पॉइंट पे मेरे पास कैच आया, राइट साइड पे था और वो मुझसे ड्रॉप हो गया क्योंकि मुझे नजर नहीं आया। अगर हम देख सके शोएब अख्तर स्टैंड अगर हमें दिखाया जाए प्लीज। एक और अच्छा शॉट, ये शोएब अख्तर स्टैंड की तरफ ही ये शॉट खेले थे अब्दुल्ला शफीक, लेकिन रास्ते में हायल हुए। इसके ऊपर लगे हुए थे तंबू, वो भी लाल रंग के, और बॉल जो है उसमें बिल्कुल गायब हो गया। ट्रस्ट में मुझे नजर ही नहीं आया कि बिल्कुल वो, आखिर में मुझे पता चला ये तो इधर है। मैंने फिर हाथ उसको दे दिया था, तो थोड़ा राइट साइड पे था, बिल्कुल सीधा भी नहीं था, बट दैट वाज अ बिग मिस। नहीं ठीक है। और उस पे फिर राहुल द्रविड़ ने 270 रन किए थे, कितने? 274। चलिए अगर राहुल द्रविड़ ना करता तो उनकी बड़ी लंबी बैटिंग लाइन थी, कोई और कर जाता। लक्ष्मण भी थे उसमें और सचिन तेंदुलकर थे, गांगुली थे। जाहिर है कि जब आप फील्डिंग कर रहे होते हैं तो हो जाता है, जब पस मंजर में आप गेम को खो देते हैं। मैं खुद मुझे बहुत अफसोस हुआ था उस कैच के ड्रॉप करने का, बट क्रिकेट में आपको पता है हो जाता है, ये कैचेस होते हैं ड्रॉप। जी हाँ, ये भी खेल का हिस्सा ही है। वजह मैंने आपको बता दी है, बाकी इंसाफ आपने करना है। नहीं बिल्कुल, जो है ये तो मोहम्मद शमी से आपको ये मोहम्मद शमी को आपको जवाब देना चाहिए। वैसे इंसाफ यहाँ कम ही मिलता है, बट अल्लाह इंसाफ करे, बट आप खुद फैसला करें। लाल तंबू पीछे और लाल बॉल, ये खेल का हिस्सा है यासिर, और जाहिर है लाइटर नोट पर नहीं बात हुई बिल्कुल। थी और अब तो जाहिर तारीख का भी हिस्सा बन चुका है। यासिर जो है पाकिस्तान के मायराज खिलाड़ी थे, ओपनिंग बैट्समैन। अब्दुल्ला शफीक के हाथ में ये झटक रही, बार बार तकलीफ का एहसास है, और अगर ये पूरी तरह फिट नहीं है तो क्या इन्हें खेलना चाहिए इतने अहम सीजन से पहले? आगे टेस्ट के लिए टीमें आने वाली हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बट मे बी उनकी इंजरी इस नोयत की ना हो। हाँ अगर स्टिचेस आए तो फिर नहीं खेलना चाहिए। फिर तो मेरा ये मशवरा है कि ना ही खेले तो अच्छा है, क्योंकि मुझे भी आ चुके हैं, ये देखें वेबिंग पे, कि आपके अगर स्टिचेस एक दफ़ा खुल जाए तो दोबारा खुलते रहते हैं, अगेन एंड अगेन। ये मेरी 3 दफ़ा ये इस पे मेरे स्टिचेस खुले हुए हैं, तो ये बड़ा एक हसास जगह है ये। उनके स्टिचेस तो नहीं आएंगे, स्टिचेस तो नहीं है। ये अब्दुल्ला शफीक जो हैं, ये कल जब स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे तो साइम अयूब का एक कैच पकड़ने की उन्होंने कोशिश की थी और ये गेंद पैड को लगती हुई गई। सरफराज अहमद अच्छा गेंद तक जा पहुंचे, अच्छी विकेट कीपिंग फॉर्म दिखाई है सरफराज अहमद ने, दोनों तरफ जो है डाइव करते हुए नजर आए। अब्दुल्ला शफीक
कि जब भी ये गेंद को खेलते हैं तो इनका हाथ जो है, निचला हाथ जो है हट जाता है हैंडल से, उससे जाहिर हो रहा है तकलीफ है। जी बिल्कुल जाहिर हो रहा है और डेफिनेटली है। अब देखना होगा उनको बॉल लगा कहाँ पे है, और इंजरी हुई तो हमें पता है स्लिप में थी। बॉल जो आगे गिरता है उसको अक्सर इंजरी का शिकार हो जाता है बैट्समैन, फील्डर उस बॉल पे। तो बड़ी ध्यान से फील्डिंग करनी चाहिए ऐसी बॉल पे। हालांकि अच्छे स्लिप फील्डर हैं और इसमें कोई शुबा नहीं, टेस्ट मैच में भी उन्होंने अच्छे कैचेस पकड़े। ये अच्छा शॉट था ऑफ द टोस, एक और टिपिकल अब्दुल्ला शफीक का फ्लिक शॉट, और उसमें उन्होंने 3 रन और पाए। गेम को दोनों तरफ मिडल करने में कामयाब हुए हैं। ये एक और क्वालिटी शॉट अब्दुल्ला शफीक का, जो हम बात कर रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली बड़े इक्विप्ड हैं और उनकी टेक्निक इतनी अच्छी है कि जो बैट बॉल होता है वो ऑटोमेटिकली उसको वो बाउंड्री पे पहुंचाते हैं। ये देखिए इनका जो सर है वो फॉल ओवर बिल्कुल नहीं करता, और यही जरूरी होता है इस तरह के स्ट्रोक्स में। ये कामयाबी का राज होता है कि आपका सर जो है गिरना नहीं चाहिए ऑफ स्टंप की तरफ, वरना गेंद पैड पर लग जाएगी। जी हेड पोजीशन तो की है बैटिंग में, और इसमें अब्दुल्ला शफीक मास्टर हैं। अब्दुल्ला शफीक का बहुत मजबूत दिफा है और वही इनको एक कामयाब ओपनर बनाता है। हमने जितने भी बड़े बड़े ओपनर्स देखे हैं तब जिन्हें हमें देखने का इत्तेफाक हुआ, सुनील गावस्कर और गॉर्डन ग्रीनिज, उनसे ज़ाहिर के बेहतर ओपनर्स जो हैं पिछले 50-60 साल में टेस्ट क्रिकेट में पैदा नहीं हुए। और दोनों की खूबी ये थी कि एक तो तवाज़ुन अच्छा था और दूसरा उनका जो दिफा था बेहद मजबूत, सीसा पिलाई की दीवार की तरह होता था। ये बिल्कुल अपने फर्स्ट इनिंग में जिस तरह आउट हुए थे उसी तरह का कोई इरादा रखते हैं। फंस गया था बॉल हाथ में। अगर अब्दुल्ला शफीक जितनी देर खड़े रहेंगे प्रेशर जो है ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा सिंध की तरफ, क्योंकि ये आपको अलाउ नहीं करते कि आप इनको ऑफलाइन बॉल करें। विल डेफिनेटली पुट यू अवे विद रन्स। 3 ओवरों में 14 रन बने अभी तक तारिक भाई। या ये पाँव पर लगा था और वैसे भी गेंद जो है बल्ले की फेस से आई थी, तो कभी भी आसान नहीं होता शॉर्ट लेग के फील्डर के लिए। ये जो फील्डर है ये बैटिंग पैड के लिए खड़ा किया जाता है, और अगर गेंद पूरी तरह बल्ले के फेस से आई है, आप कैच कर लेते हैं तो वो एक बोनस है। जी जिस तरह पहले इनिंग में किया था अली जरियाब ने, किसका क्या? हाँ वो तो साहिम थे ना। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ 33 ओवरों के इख्तिताम पे 84 पे 4। ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो चला है। 144 रन की बढ़तरी है सेंट्रल पंजाब को। अली शान, आमिर यामीन
आने वाले खिलाड़ी हैं। टेल के लिए यहाँ बैटिंग करना इतना आसान नहीं है। इस पिच पर हमने यही देखा है, दोनों टीमों की जो टेल थी वो बड़ी जल्दी सिमट गई और इसलिए जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है इन हालात में। जी बिल्कुल। इस पेयर के बाद अली शान हमने कभी उनको बैटिंग करते मैंने देखा नहीं है, बट आमिर यामीन एक ऐसे प्लेयर है कि जो कुछ रन्स कर सकते हैं। और उसके बाद फिर टेल शुरू हो जाएगी। आपने सही बात की तारिक भाई। फिर उसके बाद इस पिच पे टेल के लिए रन्स करना इतना आसान नहीं होगा। तो ये 150 और 60 रन के लिए 220 प्लस के रन्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा फिर। जी हाँ, क्योंकि आज मोहम्मद अली ने जो स्पेल किया उसके बाद सेंट्रल पंजाब को भी एक उम्मीद रहेगी। हालांकि सिंध की बैटिंग बड़ी मजबूत है, ये अच्छी टीम है सिंध की। इनके पास लेग स्पिनर है, इनके पास बाएं हाथ का एक स्विंग बॉलर है और आसिफ महमूद ऑलराउंडर हैं। वो मुख्तलिफ तर्ज के बॉलर हैं, ज़्यादा तेज़ बॉलिंग करते हैं और मोहम्मद उमर जो है कंट्रोल देते हैं। चौरासी पर 4 विकेटें गिरी हुई हैं और रन बनाने की औसत जो है वो खासी कम है क्योंकि विकेटें गिरती रही हैं। 2.47 रन बनाने की औसत है और इन 4 रन के बाद यकीनी तौर पर इसमें इजाफा होगा। अब्दुल्ला ने बड़ी जल्दी अपनी कलाई को गिरा दिया था। सॉफ्ट हैंड से उन्होंने खेला, क्योंकि गेंद ज्यादा फाइन ना जाए, ज्यादा उछल कर ना जाए। जी बिल्कुल। और इंटेंशनली खेला। ये शॉट है उनकी, 4 रन हासिल किए। यहाँ इस वक्त कदरे हम कह सकते हैं इत्मीनान का एहसास है सेंट्रल पंजाब के इस खेमे में। और अब्दुल्ला शफीक जो है ये वैसे भी जब बैटिंग कर रहे हूँ तो एक इत्मीनान रहता है टीम को। ये जो है बहुत पहले मुकाबला खेला गया था, यासिर हमीद की इससे बहुत अच्छी यादें वाबस्ता हैं। जी बिल्कुल। ये तो मेरा 1999 में कायदम ट्रॉफी का मैच था, पिशावर वर्सेस रावलपिंडी। और ये तो मेरा यादगार मैच है क्योंकि इसमें मेरा पहला 100 था, फर्स्ट क्लास की पहली 100। और सेकंड इनिंग में मुझे बिल्कुल याद नहीं था, ये यही बता रहे हैं 81 भी मैंने किया था। हाँ, क्योंकि यासिर हमीद जो है और इसमें शाह फैसल भी थे, शाह फैसल भी खेल रहे थे हमारे साथ। ये मुनफरिद रिकॉर्ड है यासिर हमीद का कि पहले टेस्ट मैच में भी सेंचुरी बनाई, पहले फर्स्ट क्लास मैच में भी सेंचुरी बनाई। पहली सेंचुरी थी पहली मेरी फर्स्ट क्लास में। जी, पहले फर्स्ट क्लास मैच में तो नहीं पूछे तो क्या हुआ था। लेकिन पहले जो आपका पहला सीजन था कराची में जो है फाइनल में सेंचुरी बनाई, फाइनल में डबल सेंचुरी। जी हाँ, तो वो एक दिलचस्प रिकॉर्ड था कि नेशनल स्टेडियम में ये फर्स्ट क्लास में जब पहली बार खेले थे तो 0 पर आउट हुए थे। टेस्ट मैच में जब पहली बार खेले थे तो सेंचुरी कर गए थे, बल्कि 2 सेंचुरियां कर गए। तो ये करामत कैसी लगी आपको? अल्लाह ताला का करम है। 90 4 विकेटों का नुकसान था।
They say, Shah Faisal, the best defense is to attack. And that is what has been the strategy from Central Punjab. Look at that. The intent is quite clear. We're going to go after this bowling lineup. That is the right way to go. Because we felt that just before that last session, they were too defensive, they were too cautious. They lost their wickets, but they stopped too many shots. This is better from Central Punjab. Right, runs are very important. Like we said many times before, the third innings is very vitally important. Excellent piece of fielding, brilliant. This has been an exhilarating passage of play. The fight has been intense. Both the teams are really fighting hard, not giving an inch. This is just the first game of the Quaid-e-Azam trophy. And we're already loving it. It's just been brilliant, this game. The pendulum swung both ways. That's runs. 1, 2, 3, 4 of them. Once Zaid Mahmood strays and Abdullah Shafiq wasn't going to let him go unpunished because it was a freebie. And Abdullah is quite proactive. Just using the pace of the ball way outside the leg stump. No protection for Zahid. Easy pickings, Abdullah Shafiq. Yeah, even the half-fit Abdullah Shafiq is working for Central Punjab. Since the time that he has moved in, it has all changed. He's free. He's showing others that how to play. That is what you do as a senior pro in the team. He's a test opener, compact, technically correct, very patient, very beautiful. It's beautiful to watch, no doubt about that. Coming back to your point about the intent and the run scoring, Ali, I was saying third innings is important because sometimes you don't know which way you want to go. You want to occupy the crease or you want to go for runs. Central Punjab, for a moment it felt they didn't know where they wanted to go. But ever since Abdullah Shafiq's come on, look at his strike rate, 21 of 27. The partnership is already 36 of just 48. And those important runs have propelled their lead up to 155 now, which is vitally important. Interesting tactics by the captain Saud Shakil is kept that leg slip. Just because Zaid Mahmood was bowling towards his leg side and he's not 100% fit, his main hand, the left hand, is injured. And that's what he's struggling. He's been good as a captain, Saud Shakil. He's a youngster, first time captaining this huge side, and he's been getting the results. Won that National T20 Cup. Definitely the flag is flying high. They won the National T20 Cup. They're looking good here also. Yeah, they are. The bowlers responded beautifully after conceding that lead of 60. Immaculate lengths from all the three seamers. Although Asif picked up the results, but Hamza and Umar played their part. Got to give the credit to Tayyib Tahir also. He's held one end together. 75 deliveries, very unlike him. We know he's a dasher, he likes big, he likes to go hard at the bowlers. But this situation demanded a different Tayyib Tahir. And he has provided that stability from one end. And now since the time Abdullah Shafiq has come, runs have come easy from both ends. This is what one good batter can do. Important contribution, Tayyib Tahir. Because like he said, wickets were flying all around him. He just stood one end firm. And he's shown this side of his game before, last year as well in first class cricket. He showed on some tricky pitches that he has the ability to hang around. And we all know that he has the strokes. But he's pretty compact as well when he needs to be. And this is an important partnership. Because after this, we got Ali Shan and Amir Yamin, the all-rounders. It could really go south very quickly for Central Punjab if one of these two get out. Absolutely. You have that time off in the match. That's a good ball. Now this can go either way. Couple of quick wickets for Sindh. They are top.
quick men, because when they find an edge, it is hard to do that. But if it doesn't carry, it really breaks their heart and their effort as well. But on this pitch, it hasn't been the case. Edges have been carrying to the slip. Yeah, you make a good point. This pitch has something for everyone, other than us. Something for What do everyone. you want, Ali? What do you want for yourself? I've got what I wanted. I wanted a good game. I'm witnessing it. Just didn't want that one-sided game when you've got long runs from one side and the other sides to keep on struggling. That gets boring sometimes. And at the start of the season from the first game, this is what you wanted to see, the competition. At one point, Central were at the top, then Sindh was on the top, then Central again on top. Excellent. It's been a great contest, no doubt about it. And the contest between bat and ball as well is a fair reflection. Like you said, it has a little bit of something for everyone. Spin will come and play its part in the remaining part of the game as well. There you go. That's the bounce that I was talking about. Sarfraz was really taken by surprise. Omar has toiled hard. Another good over. Yeah, he's been unlucky. He's been very consistent with his line and length, and again, that kicked on a little. But it was a very careful, very cautious leave by Abdullah Shafiq. Central leading by 156 runs. Just carrying on about the contest. I do have a feeling that Zahid Mahmood will have a say in this game as well. It's the final session of day 3, and the wrist spinner can always come to the party. Beautiful weather as well, especially in the evening in the third session. It cools off a little bit. Gentle breeze, clear blue skies. And quality cricket. All in one. That's what we expected from Rawalpindi, to be honest. And it has delivered. This game will go right down to the wire. Abdullah Shafiq looking around the field. That cover fielder has been straightened up a little bit, because that's the gap he was finding. Yeah, he's looked positive with his intent. Although half fit, but still he's always searching for the runs. Very quality batter, I tell you. And the leg slip that we saw for Abdullah Shafiq goes to short leg for Tayyib Tahir. Interesting to note as well that Zahid was bowling from the media center, and on the first day he did get a little bit of extra bounce bowling from that end, but now he's bowling from the pavilion end. Slightly low. He's been very careful. Tayyib Tahir lost his wicket to an average shot in the first inning. He's learned. Because he's probably realized that this is the format that he needs to go big. This is where he needs to prove himself. That is how he got out in the last inning. The first one of this match. Reckless, lazy, you can call it whatever. But he's learned, he's come back, he's looked solid, he's been there for the team. Excellent work once again. Sindh has been doing pretty well in the field. That's Saad Khan. He's been excellent along the ground. Yep, just one drop catch by him, that of Mir Hamza. Other than that, he's been superb. Leg side-ish again. These are easy pickings. They are very strong at leg side. Both of these batters, Abdullah and Tayyib Tahir, will gather a couple of runs. That is the end of another over. Central Punjab has reached their 100 after losing 4 wickets.
Talking about Zahid bowling from the right hand in the last over. Look at the breeze. But this is the scorecard. 42 for Tayyip Tahir. He's fighting hard. Abdullah Shafiq. These two have strung a good partnership together. 41 of 61. "31 overs left in the day's play." It's the breeze I was talking about. Zahid is bowling from the pavilion end. In there it was. Lucky that he didn't time it well. Good running also. 2 runs for Abdullah Shafiq. Not a dull moment in this game. The intent is there. Umar bin Yusuf very quick across the turf. Was in the air. In the gap. You got a fielder placed there, that short point. Simon Ayub is rightly placed there for this mistimed shot. That is good cricket. Good captaincy also by South. Solid. I like this boy. So pleasing on eyes. Abdullah Shafiq. It's definitely, if you look around Shah Faisal, if you compare the openers in Test match cricket, look at that defense. Picture perfect. Yeah, I was talking about the openers around the world. There are not many solid openers in Test match cricket that we talk about. You think he's one of the best there in top 3 in terms of his defense? One thing is for sure, Pakistan has found an opener like him after a long time. So compact, and even in defense, he looks so pretty. Just blocking the ball, even the last one, when he played it right under his eyes. You use the right word, picture perfect. His forward defensive stroke is a picture, which says a lot. In this day and age, Beautiful. For no runs. sometimes as good a stroke as it was, it deserved more. But Umar bin Yusuf has been brilliant in the field. You make a point about, especially not a single 20-year-old of this pedigree and class. Even if you look around the world, you're absolutely right. We know that English openers, they're still looking for a solid opening pair. Chopped and changed a lot. David Warner's still there for Australia, but he's not young anymore. Yeah, Dean Elgar from South Africa. He's solid. Couple of Indian, KL Rahul, Rohit Sharma maybe. But I'm talking about the real solid technique. Yeah, there's, in terms of being solid, there's Pujara, but he plays at number 3. We're talking about the openers here. So, yeah, Karunaratne from Sri Lanka. There are very few. That's why I say I will rank him right there, right up there in top 3 in terms of the defensive technique. Abdullah Shafiq. And he's just starting up his career. That definitely does put him in an elite category because he's, like I said, only 20 years of age, just starting out. And he's so mature for his age. He just loves batting. And in the first innings, he proved that. Look at some of those strokes. Delectable off the back foot, using the pace and bounce, getting on top of the bounce. This one's tricky, but you need that as an opener. And the good thing is, he was ready to put away the bad balls. Whenever they came, he was ready to pounce on them. Equally good against pace and spin. Magnificent. Yeah, the strike rate also was very impressive in the first inning. That showed that not only defense, but he can attack at his will. Absolutely. Put away the bad balls. And the other thing, his fitness was remarkable. We saw him charging down for a couple runs, even towards the end of a very hot day. That also kept his scoreboard ticking, and his strike rate was amazing for such a long knock. 102 for Central Punjab.
देख लो मेरे कवर तो होना है वाटर से पहले क्या पता 2-3 ओवर का मिल जाए बॉलर अंदर हो That back foot, the front foot. It's not the first time that we've seen Tayyip Tahir go at back foot rather than playing at front foot. Look at that. This was full enough that you could have negotiated on the front foot. He's got to be careful there. He's more comfortable. He's trusting the bounce of the pitch. That's why he can rock back on that back foot. Well, they got the leg slip for him as well now. First they had leg slip only for Abdullah, but now it's for Tayyib as well. Zahid. One thing with Zahid is that in National T20 we saw him bowl a lot of googlies and they were turning. I don't see many of his googlies. I didn't notice many. And if he did, they're not turning here. Yeah, sometimes playing too much T20 cricket doesn't help these leg spinners. They tend to ball fast, flat. Oh, is there an edge? Is there an edge? Oh, no says umpire. No says umpire. What do you think? Well, it did hit, the bat did hit the ground, that's for sure. Was that the only noise? We'll have to see. Nice flighted delivery. Yeah, the bat hitting the ground. Good decision, Imran Javed. Look at Fawad Alam. Excellent expressions. He was so sure that he has nicked it. But yes, rightly so. The bat did brush the crease. Good umpire. Good decision. The kind of zip off the wicket that Zahid would like. The way Tayyib is going at the back foot is, he would really like to have slipped that flipper if he had more zip off the wicket. It's not offering him a lot of pace. He's got to rely on turning the ball. Good cricket. Top leg spin bowling and good defensive batting. He's absolutely absorbing. You can't take your eyes off this contest. Zahid is a quality leg spinner. Not getting much turn, but all his variations in pace and trajectory is really keeping Tayyib quiet. There you go, once again, that kick of a good length. Excellently taken by Sarfraz. Another great over, a maiden. 102 for 4. Important people coming together for a meeting. They need to break this partnership, which is 43 at the moment. He will have a say, definitely, Sarfraz Ahmed. He's been the captain for Sindh, for Karachi for a long, long time. He's been the captain for Quaid-e Gladiators and, of course, Pakistan national side. He has all this experience behind him of being into the different situations as a captain. And he's been brilliant with wherever he has captained the side. He's won almost everything. He's won PSL, he's won Champions Trophy, Under 19 World Cup, you name it. Captain of #1 T20 team in the world. He achieved that as well. He's got a Midas touch, no doubt about that. Interesting little change. Saim Ayub. We've seen him bowl some mystery spin in the National T20, but looks like he's going to bowl seam up. Yeah, the concentration breaker maybe. Because we see the partnership is building, is growing. So sometimes it happens that part-time bowler gets the best out of you. Mohammad Saad did it for Central Punjab. Can he do the same for Sindh? Can he just break this partnership? Just one wicket would do. That will open up an end for sure. Not a bad call. Just give your quicks a little break and see what he can do. There's a little bit of breeze, like I said. If you can get the ball to swing away, that breeze will help him take the ball away from the right-hander. A slip in a gully, a wide slip.
runs straight away. Should look to get 3, if not 4. No, they will settle down for just 2 runs. The use of the wrist from Abdullah Shafiq is just so magnificent, so pleasing on eyes. Waits for the ball enough, let the ball come to him. Look at that, waits enough, and that roll of the wrist. Picture perfect again. Because his head is in excellent position. He lines the ball up from the bowler's hand, and when your head is on the right side of the ball, you can watch it all the way come onto the blade, and that roll of the wrist, like you said at the last minute. This is going to be a challenge, I tell you. Because we know that bowlers like Saim Ayub, you know, that you tend to get easy on them, you tend to get runs on him, and in doing so you lose your wicket sometimes. So it's very important that you keep your concentration, keep your focus, keep playing every delivery on the merit like Abdullah Shafiq is doing. Looks like Sami is bringing the ball into the right-hander, which will help the batter, but if he's really able to get the ball to swing away in just a loopy half volley, I'm sure Abdullah Shafiq and Tayyab wouldn't hold back. That's the ego of top-order batters, that when they see a non-regular bowler and they see a half volley coming, they won't spare him. And that's where they can commit that mistake. Nicely driven. Nicely driven. He's not losing his focus, I tell you. He's too good for this. Well, Abdullah Shafiq is known to bat long, and his intent shows that he's not going to slip up against Siam. Beautifully played that middle of the bat. Sounded so sweet. Runs again. Just one of it. Now is a good time. Just bowl a floater. That was slightly slow. If you look at it, Abdullah was slightly early into his shot. That is the temptation that you have against the likes of Sain. Well, now he'll try his luck against Tayyab Tahir. Change of field as well. They've brought in the short mid-wicket because he's angling the ball into the right-hander. And he'll have a better chance against Tayyab Tahir, I believe, because we know that he likes to go big. He's a dasher in the side. Let's see. Oh, it was tempting. He was tempted, I tell you. The smile says it all. It's 105 for 4. Sorry yesterday. Dinner time? That's her favorite ground for the food. It's time for the desserts, I believe. Yeah, same time of the day we've spotted her. And on day 1. What is it? What is it? That's why I said it's dinner time for her. Keep searching. You'll find something. Don't worry. Back to cricket. Yeah. Very solid. What different do you think Zahid need to do? His captain is looking for some impact. I think he's done well. He's been unlucky. Couple of chances going down in the first inning. Here also, the first ball that Abdullah faced, it almost went straight to the fielder. It was a good effort. I think it's just been negotiated very well by the two batters. He's giving the ball air. He's hurrying some deliveries. He's mixing it up nicely. He's got a leg slip in place. Just looking for some luck. That's all he needs at the moment. Look, it was almost there. That's the luck I'm talking about. This catch, other day, would have gone straight to him. There's better pace in my opinion as well. Look at that drift as well. Slightly slower and higher. Almost deceived Abdullah in flight.
driven handsomely for one. He can do that because he's got protection. That one was flighted delivery, but the length was a bit too full on that occasion. But the one before that was just about perfect. Just make him wait, hang the ball in the air a little bit longer. Yeah, that's what I said. He's mixing it up nicely. He's not being predictable with his length. He just needs some luck. And we know that once leg spinner who's bowling well gets the luck, he can be very, very dangerous. And Sindh would be hoping that he gets that mojo back right here, right now. Because now is the time to get wickets. Sindh, the central is leading by 167. You need to put a break there. There's an old saying, if you add 2 wickets to the total, you'd know where exactly the game stands. Add 2 wickets to 107 for 4. That means that Central Punjab will be leading 167 for 6. That means that Sindh is slightly ahead as well if they break through. 107 for 4. Yeah, let's have a look where the match stands at the moment. Central Punjab batting first, 428, magnificent 100 by Abdullah Shafiq. Mir Hamza bowled well, 368 in reply by Sindh. Quaid-e-Azam getting 100. Mohammad Ali, brilliant, 4 wickets. And now Central Punjab in their second inning, 107 for 4. Tayyib Tahir still there, very solid on 43. Asif Mahmood was those brilliant 3 wickets. And Central Punjab leading by 167. At the top of the card at 428, Sindh had bowled well and used the conditions better. Central Punjab should never have gone that far. Saim Ayub for his second over. What I want him to do is just bowl those 6 deliveries consistently outside the off stump. Just the floaters to Tayyib Tahir, I mean. Not to Abdullah, but to Tayyib Tahir. And just test his patience. Just touch his ego a little. As you mentioned in the last over, it's the egos that matters. So 6 consecutive deliveries. Let's see. He's blocked the first 2. Will he do it for the rest of the over? This is it Ahmed Daniel? Is it Abid Ali and Richard Stonia? What's that? Outside the off stump. Oh, something different. That's what he's surprised on. Tayyib Tahir also, that he was not expecting it. Indecision, it looked like he was leaving the ball. Then it kept coming in. Sami is bringing the ball in. Look at that. Just brings the bat down in time. Something's brewing here. Something's cooking. Come on, Saim Ayub. Wicket to wicket, I'm not 100% sure if this is what Saim Ayub is here for. You got to give yourself a chance to break the partnership. That is what he's here for. He's gearing up. Wonderful spell he bowled earlier. He would be needed. Just the role of Saim Ayub. Wicket to wicket, blocking runs won't help. Clipped. Poor bowling. 4 runs. Wrong line. He's paid the price. Tayyib Tahir accepted the gift. That angle started too straight and kept going on, and just Tayyib just needed to get a tickle to it. Just the roll of the wrist. Fine leg was quite wide. Easy pickings. Again, you have to identify the role Saim Ayub is here for. 47 for Tayyib Tahir. That's what I wanted. Outside the off stump, tease him a little, make him drive. End of 42, Nelson on the board after losing 4. As players, take drinks.
अभी हमने अरशद खान को हाँ वो वैसे आप जिक्र कर रहे हैं ना बात। ऑफ स्पिनर नहीं है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, उससे जिक्र कर रहे हैं। सकलैन अब कोच है फिर भी नहीं है, फिर अरशद खान को रिलेट कर दीजिएगा कि जब सकलैन खेल रहे थे तो दो स्पिनर थे, अरशद खान और सकलैन। तो अरशद खान उनका करियर लंबा हो सकता था अगर वो कोई और दौर बीच में आते तो और था कुछ कहने के लिए। हाँ ये बात तो है। बारिश हो रही इधर असल में वो नहीं है ना, कमेंट बॉक्स वगैरह नहीं है। उसमें भी हम बड़ा कैजुअल बैठे हुए थे इस तरह कमरे में, समझ नहीं आता। तू यासिर 111 4 आउट पे बस यही बात। 111, 4 खिलाड़ी आउट। अब्दुल्ला शफीक और तैयब ताहिर की पार्टनरशिप जारी। और ये विकेट से आज के दिन की आसिफ महमूद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और तीनों बोल्ड किए। उसके बाद एक ये चौथी विकेट जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग के बायस रन आउट हुए कासिम अकरम। बॉलिंग गार्ड की तरफ अगर देखें तो मीर हमजा ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, 10 ओवर 14 रन दिए लेकिन कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। मोहम्मद उमर ने 11 ओवर में 30 रन दिए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। आसिफ महमूद ने 8 ओवर में 26 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया। यहाँ टॉस जीता सिंध ने। उनमें सेंट्रल पंजाब को पहले खेलने को कहा। 428 रन बनाए सेंट्रल ने। सिंध ने जवाब में 368 रन स्कोर किया आज। अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी बनाई, फवाद आलम ने उसका जवाब सेंचुरी से दिया। और अब सेंट्रल पंजाब की टीम ने 4 विकेट पर 111 रन बनाए हैं और 171 रन आगे है इस वक्त सेंट्रल। 6 विकेटें उसकी बाकी हैं। तैयब और अब्दुल्ला विकेट पर मदसूर मौजूद हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल पंजाब की टीम इस खेल में वापस आ गई है और अब ये बराबर का मुकाबला हो गया है। या और सऊद उनकी ख्वाहिश है कि उनको स्पिनर जो हैं इस मौके पर ये विकेट दिलाएं ताकि एक बार फिर जो दरवाज़ा है वो पूरी तरह खुला रहे सिंध पर। बहुत रन बनाए अब्दुल्ला शफीक ने इस बल्ले के साथ। ये अच्छा साल रहा है ये 2021 का जो साल था। पहले बांग्लादेश में इनका टेस्ट करियर शुरू हुआ, वहाँ पर इनने 2 मैच विनिंग इनिंग्स खेली। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची में एक मैच बचाओ इनिंग्स खेली और बाद में इन्होंने जो हाल ही में गॉल के टेस्ट मैच में पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। पहले टेस्ट मैच में 160 रन की इनिंग्स थी। एक ही बरस में इन्होंने इतना कुछ हासिल कर लिया है जितना कई जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं अपने पूरे करियर में ख्वाब देखते हैं ऐसी इनिंग्स का। यासिर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसकी सबसे जो मेन वजह है वो यही है कि इनका फोकस, इनकी कमिटमेंट और ये टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। शॉट सिलेक्शन अच्छी है उनकी, जल्दी नहीं करते शॉट्स में और उनके पास बहुत टाइम है। फवाद आलम आए हैं पहली दफा बॉल करने इस मैच में और विलियन एंड से बॉल करेंगे। साइम अयूब को 2 ओवर्स के लिए आजमाया गया। विलियन एंड से फवाद आए हैं। पहली इनिंग्स में अच्छी खासी बॉलिंग फवाद आलम से कराई गई थी लेकिन क्योंकि आज सेंचुरी बनाई है इसलिए निस्बतन देर से इनको लाया गया। जी 4 डे क्रिकेट में स्पिनर्स का बड़ा रोल होता है तारिक भाई। और
अच्छे स्पिनर्स का होना टीम के लिए एक ब्लेसिंग होती है। यार जब ये नए नए आए थे तो सेलेक्टर्स का इनके मुतालिक ख्याल था कि ये ऑलराउंडर हैं। फवाद आलम, जब इनका आईसीसी वर्ल्ड टी20 2007 के लिए इंतखाब हुआ तो अब्दुल रज़ाक को ड्रॉप करके इनको उनकी जगह दी गई थी और जो सेलेक्टर्स ये समझ रहे थे कि ऑलराउंडर साबित होंगे फवाद आलम, लेकिन ज़ाहिर है कि इनका स्ट्रॉन्ग सूट है, वो हमेशा से इनकी बैटिंग रही है। जी बिल्कुल, और इन्होंने बैटिंग में बियॉन्ड द लिमिट्स इन्होंने परफॉर्मेंस दी है और प्रूव किया है फर्स्ट क्लास लेवल पे, और 10 साल बाद कम बैक किया। इस बार बहुत करीबी मामला था, रिसीव हो गए थे अब्दुल्ला शफीक, ऑन खेलने गए। यहाँ ये गेंद जो है इसने अपनी लाइन को होल्ड किया, अब्दुल्ला शफीक जो है माइल हो गए थे लेग साइड में खेलने के लिए। प्रिएम्प्ट किया इस शॉट को अब्दुल्ला शफीक ने, लकीली गली का फील्डर मौजूद नहीं था, नहीं तो बिल्कुल सीधा हाथों में जाना था। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ 43 ओवर के इख्तिताम पे 112 पे 4। दोनों एंड से इस वक्त स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं। रिस्ट स्पिनर ने ये फार एंड संभाला हुआ है जो मीडिया सेंटर एंड कहलाता है। जाहिद महमूद जो है पहली विकेट की तलाश में है। इस इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने बहुत ललचाया है, उनको फ्लाइट दी। पहली गेंद पर तकरीबन इनको विकेट मिल जाती, गेंद अगर हाथ लग जाती उस वक्त डाइविंग फील्डर के। जी बिल्कुल, थोड़ा सा बाई जानिब गया था वो बॉल, थोड़ा हाथ में होता तो विकेट मिल सकती थी। अब्दुल्ला शफीकी और जाहिद महमूद का एंड चेंज किया है, मीडिया एंड से लेके आए हैं जाहिद महमूद को। यहाँ इस वक्त दोनों एंड से स्पिनर जरूर बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन ऑफ स्पिनर कम आपको स्पेशलिस्ट नजर आते हैं इस वक्त पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। पिछले साल मुबस्सिर खान विकेटें जरूर लेते रहे, लेकिन जो एक पाए के ऑफ स्पिनर होते थे, तो मुबस्सिर खान भी ज्यादा अपनी बैटिंग की वजह से टीम में रहते हैं नॉर्दर्न की, वो अब आपको दिखाई नहीं देते। बस जी बिल्कुल, अब स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर बिल्कुल कोई नहीं दिखाई देता किसी भी क्रिकेट में। एक अच्छा शॉट अब्दुल्ला शफीक का, कट किया, उसे लेट खेले और 4 रन हासिल किए। ऑफ स्पिनर की आप बात कर रहे थे तारिक भाई, तो स्पेशलिस्ट जो ऑफ स्पिनर है वो 4-डे क्रिकेट में तो आना चाहिए कहीं ना कहीं नज़र। T20 क्रिकेट में एक सॉफ्ट टारगेट होता है जिसकी वजह से ऑफ स्पिन कोई करने की हिम्मत नहीं करता उसको अपने करियर बनाने की, इसलिए स्पेशलिस्ट बहुत कम मिलते हैं। साथ में बैट्समैन होते हैं और साथ में ऑफ स्पिन करते हैं, जिस तरह कासिम अकरम है, मुबस्सिर की आपने बात की। जहाँ 90 की दहाई में भी ये एक मौके पर लगता था कि डाइंग आर्ट है, लेकिन फिर सकलैन मुश्ताक आए, अरशद खान ने
उससे पहले ही पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में एक तहलका सा मचाया हुआ था जब ये रेलवेज के लिए खेले थे और बाद में ये लाइट बैंक की टीम में शामिल हो गए। ये बहुत मजबूत टीम थी 90 की दहाई की। और इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। 116 पर 4। सत्तावन रन की पार्टनरशिप जारी है। दोनों बैट्समैन अब किसी मुश्किल के बगैर पेशरफ्त कर रहे हैं। तैयब ताहिर एक स्ट्रोक के फासले पर हैं। अब निस्फ सेंचुरी से अब्दुल्ला शफीक के आने के बाद स्कोर बोर्ड भी मुतहरिक रहा है। तो वापस आते हैं अरशद खान और सकलैन मुश्ताक का जो जमाना था। अरशद जितने बासलाहियत ऑफ स्पिनर थे और उन जैसा जो बॉलिंग एक्शन है ये मैंने नहीं देखा किसी ऑफ स्पिनर का। इतना नीट क्लीन बॉलिंग एक्शन, खासी बुलंदी से वो गेंद को छोड़ते थे। जी बहुत टॉल होते थे, वो लेंथी थे, टॉल थे, और उनकी जो बॉल में एक चीज ये थी कि वो बॉल जब पड़ता था तो ऊपर आता था, बाउंस होता था, एक्स्ट्रा बाउंस उनको मिलता था। यहाँ पे मुझे याद है, यहाँ पे इंडिया में भी एक टेस्ट मैच में 2005 में जो बेंगलोर में हमने खेला था, तो अर्शद भाई ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी उसमें। या खासतौर पर आखिरी दिन जो आप बाउंस की बात कर रहे हैं उस जीना स्वामी स्टेडियम की पिच पर जब पाकिस्तान को हर सूरत में वो टेस्ट मैच जीतना था, वो उन्होंने बड़ी अहम विकेट हासिल की थी। राहुल द्रविड़ जो सेट हो गए थे, राहुल द्रविड़ को उन्होंने आसिम कमाल के हाथों कैच आउट कराया था। शॉर्ट लेग पर मौजूद थे। एक तरफ यूनुस खान फील्डिंग कर रहे थे बैट्समैन के सामने और दूसरी जानिब आसिम कमाल थे। मैं स्लिप में था बिल्कुल। बहुत ही यादगार वो मुकाबला था। इंजमामुल हक का समा टेस्ट मैच था और अरशद खान ने बहुत अच्छा स्पेल किया था और बहुत मुतासिर किया था भारत में। उस वक्त जो प्रेस बॉक्स में जो लोग मौजूद थे, क्योंकि भारतीयों को जो विजिटिंग स्पिनर्स हैं ये कम पसंद आते हैं, अरशद खान की बहुत तारीफ हुई थी वहाँ। जी बिल्कुल, फेमस टेस्ट विक्ट्री थी वो 2005 में बेंगलोर में। इस पे हम बात करेंगे। 117 पे 4। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, ठीक ही था और ये निकल गई 4 रन के लिए। खासी हद तक इसका पीछा किया खान ने, लेकिन गेंद उनसे दूर होती चली गई और तैयब ताहिर ने इस सीजन की पहली निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। बड़ी अच्छी बैटिंग की उन्होंने। दबाव में आज उनकी टीम को सख्त जरूरत थी तो विकेट पर मौजूद रहे। पहली इनिंग्स की नाकामी का भी उनने इजाला किया। जी तैयब ताहिर ने बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया अपनी बैटिंग के दौरान और अपनी शॉट्स को होल्ड भी किया, लेकिन इस मौके पे बाहरा किनारे लेते हुए लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। 50 रन मुकम्मल तैयब के। तो 90 का जो अशरा था पाकिस्तान में, वो ऑफ स्पिनर का भी हम उसको अशरा कह सकते हैं। गो के मुश्ताक अहमद, दानिश कनेरिया थे, अब्दुल कादिर भी थे 90 की दहाई के शुरू में।
लेकिन उसमें मुर्तज़ा हुसैन एक बहावलपुर के ऑफ स्पिनर थे, राजहंस से कोयटा के ऑफ स्पिनर और एलाइट बैंक के, उनके अलावा जी सकलैन भाई उस वक्त टीम का एक रेगुलर फीचर बन गए थे, तो ये सारे जितने भी ऑफ स्पिनर थे उनके शेडो में चले गए। लेकिन और अरशद भाई की क्वालिटी ये थी कि वो सकलैन मुश्ताक के होते हुए उन्होंने एज अ सेकंड ऑफ स्पिनर टीम में जगह बनाई, वेस्ट इंडीज़ के टूर पे और इंडिया के टूर पे। फिर यहाँ पे ट्रेस्केथिक को बहुत अच्छा आउट किया था उन्होंने वनडे में, आखिरी जो वनडे इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले थे। ये खासी दिलचस्प सी बैटिंग थी, जहाँ गेंद जो है पड़ने के बाद क्योंकि बाहर निकल रही थी लगता है कि ज्यादा तजुर्बा नहीं है और शायद लेग स्पिनर को पहली बार इन्होंने बैट किया। लगता है कि टांग निकालने की उनको उन्होंने टांग निकालने की जरूरत नहीं समझी ज्यादा, वो वहीं से टांग को पैड का फ्लैप लगाया। इट वाज क्वाइट फनी। या तो अरशद खान की जो कहानी है उसको खत्म करते हैं, समेटते हैं उसको। आपका तो खासा ताल्लुक रहा, आपने पहला फर्स्ट क्लास मैच भी उनकी कप्तानी में खेला, अभी भी राब्ता रहता है अरशद खान के साथ यासिर? चाशिया बहुत बड़ा छक्का लगा दिया और गेंद के दूसरी मंजिल से आकर टकराई। तैयब ताहिर जो 50 से पहले बहुत मोहतात और खबरदार थे, निस सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद उनने धावा बोल दिया लेग स्पिनर पे। कदमों का अच्छा इस्तेमाल तैयब ताहिर का, और उन्होंने अब डिसाइड कर लिया जी, यूं लगता है कि अब स्पिनर को वो ग्रांटेड नहीं लेंगे। अच्छा शॉट, पूरा मिडल किया, पूरी कुवत के साथ ये शॉट खेला उन्होंने। पहला छक्का उनकी इनिंग्स का 129 पे 4। आज के दिन अभी भी 22 ओवर्स का खेल बाकी है और कल पूरे दिन जो है वो 90 ओवर्स होंगे। 190 रन सेंट्रल पंजाब की टीम आगे निकल चुकी है और आज खेल के आखिर तक अगर ये 200, 260, 265 रन तक पहुंच जाते हैं और यासिर ये दोनों बैट्समैन अगर नॉट आउट जाते हैं शाम तक, तो कल फिर सेंट्रल पंजाब की क्या सोच होगी कि सुबह पहुंचते ही इनिंग्स को खत्म किया जाए, क्योंकि मैच जीतने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी इनिंग्स में आपको पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे। पॉइंट्स तो आपको जो बैटिंग या बॉलिंग के हैं वो पहली इनिंग्स में ही मिलते हैं। आई थिंक जिस तरह ये लोग बैटिंग कर रहे हैं और शाम तक ये लोग खेलते हैं, तो उनकी डेफिनेटली 250 के करीब करीब ये जा सकते हैं। और कल वाटर से पहले खेल के, और वाटर पे ये अगर सिंध को इनवाइट करें, इस वक्त स्कोर भी 300 प्लस हो सकता है। पानी के वक्फे पहले जो पानी का या पहला 1 घंटा जो है वो खेल कर, पहला घंटा खेल कर ये दावत दें सिंध को और टारगेट दें एक 300 का, तो आई गेस ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। यहाँ पर 3 रन बनने चाहिए और देखना ये कि क्या ये चौथे रन के लिए भी दौड़ेंगे, लेकिन दूसरा रन लेते हुए अब्दुल्ला शफीक का इरादा ऐसा करने को नहीं था। खासा बड़ा मैदान है, बड़े बड़े गैप्स हैं, ऑन साइड में फील्डर को स्क्वायर लेग से आना पड़ा। अच्छा टिकल किया तैयब ताहिर ने, जब रन्स बनाने के मूड में नजर आ रहे हैं।
जी 50 के बाद तैयब ताहिर काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं और अपने शॉट्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब्दुल्ला शफीक की पिच पे आने से उनको एक कॉन्फिडेंस मिला है। फवाद आलम ने अपना तीसरा ओवर साइन ऑफ किया इस डॉट गेम के साथ 133 4 विकेट पर सीपी। तैयब ताहिर ने आज वही किरदार अदा किया है सेंट्रल पंजाब के लिए जो फवाद आलम ने निभाया था। इससे पहले सिंध के लिए खेलते हुए शुरू में खासे मोहतात थे और स्ट्रोक्स उन्होंने अपने रोके हुए थे, गेंदों को मेरिट पर खेलते रहे और इस वक्त उन्होंने पूरी धाक बिठाई हुई है। जी अच्छी इनिंग तैयब ताहिर की और जो उनकी रेपुटेशन है, इज लिविंग अप टू हिज रेपुटेशन। रन गेटर हैं, T20 में भी इन्होंने काफ़ी रन्स किए सेंट्रल पंजाब के लिए भी और सीजन क्रिकेटर हैं। वापस आसिफ महमूद को अब लाने का फैसला हो गया है, जिन्होंने आज सिंध के लिए एक जो जीत की हम कह सकते हैं कि जो एक जोत है वो बार बार वो इनमें जलाए रखी है। या इनका बॉलिंग एक्शन खासा दिलचस्प है और खासा कोई काम बॉलिंग एक्शन है। जी बिल्कुल। और तैयब ताहिर को देखें तो वो अपनी बैटिंग में हैंड्स और रिस्ट का बड़ा यूज़ करते हैं। इवन वो जब ड्राइव खेलते हैं तब भी वो अपने रिस्ट को ब्रेक करते हैं। और अगर इस शॉट को भी हम देखें तो उन्होंने अपनी रिस्ट को ब्रेक किया। दो इसमें इतनी पावर नहीं थी शॉट में क्योंकि शोल्डर्स ज़्यादा यूज़ नहीं होते। आपको इनकी जो डिफेंसिव टेक्निक है आपको वो कैसी लगी है? क्योंकि आप खुद टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं। थोड़ी सी फुट मूवमेंट में मुझे लगा इनकी कि शुरू में ये इनकी फुट मूवमेंट उस तरह नहीं होती, लेकिन इनके हैंड्स अच्छे, हैंड आई कोऑर्डिनेशन और बाहर का बॉल ठीक छोड़ रहा है इन्होंने। और ये है कि इनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छी है जिसकी वजह से ये बॉल को कनेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह जल्दी से आए बॉल की लाइन में और एक रन हासिल किया। यार ये भी एक वजह है कि इनको ओपनिंग पे या वन डाउन पोजीशन पर रेड बॉल क्रिकेट में नहीं खिलाया जा रहा, क्योंकि जब ये T20s खेल रहे थे या वनडे क्रिकेट में ये जो है शुरू के 3 नंबर्स पर ही ये खेलते हैं, लेकिन यहाँ इनको यहाँ चौथे नंबर पर खेल रहे हैं। इंटरेस्टिंगली अगर आप MS धोनी को देखें, उनकी भी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, अगर आप करीब से उनको देखें तो वो भी थोड़े से ना, लेकिन उन्होंने बाय द टाइम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया और वो एंडेड अप वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इन द वर्ल्ड और एक सक्सेसफुल कैप्टन बने भारत के। यहाँ थोड़ी सी परेशानी है सऊद शकील के लिए, जिस तरीके से ये पार्टनरशिप अब आगे बढ़ती जा रही है, दोनों एंड से रन इस वक्त बन रहे हैं। और जो ज्यादा परेशानी की बात है कि वो आसार भी नहीं लग रहे विकेट के, क्योंकि ऐसे में फिर ये सोच जो है जहन पर असर अंदाज होती है कि बैट्समैन गलती करे, आप इंतजार करें और मैच जो है उसकी सूरत हाल ऐसी आप ज्यादातर तक इंतजार कर नहीं सकते, क्योंकि खेल फिर आपकी पहुंच से दूर हो जाएगा। बिल्कुल 54 पे 4 आउट थे और अब 135 पे 4 आउट हैं। 76 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है इन दोनों के बीच में। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ 135 पे 4।
सुख का सांस मोहम्मद साद ने लिया होगा और बैटिंग जो है दोनों ही इनिंग्स में हमने देखा कि जब ये गेंद जो है 45 ओवर्स 50 ओवर्स पुरानी हो जाती है उसके बाद निस्बतन सहल हो जाती है बैटिंग करना और इस वक्त 2 सेट बैट्समैन विकेट पर मौजूद हैं लेकिन सिंध की मुश्किल ये है कि वो अगली जो नई गेंद है उसके इंतजार के ये मुतहमिल नहीं हो सकते इनको विकेट लेना है आज ही और कोशिश होनी चाहिए कि अभी अगली नई गेंद तक तो गेम इनके हाथ से बिल्कुल निकल ही जाएगी और उसमें अभी है 22 ओवर हैं बल्कि नहीं 32 ओवर्स। अच्छी ट्राई की फील्डर ने। हो गया दोनों साइड पे। उमर थोड़ा आगे रहना, उमर बहुत पीछे हो। यहाँ ये खुद भी खासे फिट हैं ये इयन फिशर ये फॉर्मर यॉर्कशायर के खिलाड़ी हैं और प्रोफेशनल ट्रेनर हैं। जबरदस्त। अगर आपका ट्रेनर खुद ट्रेनिंग करे तो कितनी मोटिवेशन मिलती है। अगर मेरा ट्रेनर इस तरह ट्रेनिंग करे तो मैं तो हर वक्त उसके साथ ट्रेनिंग करता रहूँ। ट्रस्ट मी। तो आपके लिए कितनी मोटिवेशन की बात है एज ए क्रिकेटर। डेविड डॉयर एक गैर मुल्की ट्रेनर आए थे जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे। अच्छे ट्रेनर थे वो भी जी, बहुत अच्छे थे, वेरी प्रोफेशनल और उन्होंने बहुत ही अच्छा टाइम गुजारा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ और हमने उनके साथ बहुत इंजॉय किया। ही वाज आल्सो वेरी फिट और वो भी ट्रेनिंग करते थे, हम लोगों के साथ करते रहे वो ट्रेनिंग। ये ताहिर ने इसे एतमाद से खेला, ज्यादा स्पिन नहीं कर रहे। फवाद आलम गेंद को 138 सेंट्रल पंजाब, अभी भी 4 ही खिलाड़ी आउट हैं। Compact. This has been a great partnership between these two, Dullah Shafiq and Tayyab Tahir. 79 runs they yielded together. 59 for 4 at one stage. Central Punjab were the lead of only 119. Now they propelled to 198. Once again clawing their way back into this game. Asif would need another burst like he did in the afternoon session. It's that time of the day again. Very warm welcome to Ali Yunus in the complex. Thank you very much. 198 the lead for Central Punjab, and we can safely say that they are in the commanding position of this game. Courtesy to this partnership, which is 79 at the moment, it has come at a good time, at a much needed time. Tip and run. Good call, good response. Chance of an overthrow, maybe no. You talk about the list of those off spinners. You really see a lack of off spinners in the circuit. We'll come back and have a look, but
Look at that. He's played it with soft hands. Just an eye contact. Tayyip Tahir was away in a flash. He's come back with a back of a length attack. I think they just want to bounce out for a little while because nothing's happening. And it's not a bad tactic. Asking a lot late in the day. Although they've only started their bowling innings just before lunch. Relatively fresh. Good breeze should help Asif's outswingers to the right-hander. Still he's angling the ball down. Plenty of effort. But didn't get the desired result because the line wasn't good. Yeah, they're trying to do something different. Trying to unsettle these batters. A couple of short deliveries, maybe follow up with a fuller one. It's now the desperate times for Sindh side. They do need to break this partnership because Tayyip Tahir, if he stays on, he can be very lethal. That's the full delivery that you were asking for. Neatly tucked away for a couple of runs. Tayyip Tahir is in good order. He's lining the ball up very nicely. His balance is good. And taking Central Punjab forward, the lead has now gone past 200 runs. 141 for 4. I was talking earlier about some off-spinners. There's very few off-spinners on the circuit these days. And if you see a list of some great off-spinners with most number of wickets in Quaid-e-Azam Trophy, look at that. Ejaz Faki, 85, 86, 85 wickets. Sajjad Akbar, Murtaza Hussain from Bahawalpur was a very, very good spinner. Nazir Jr., famous name. Sajid Khan in the list. Naeem Tayyib and Nazir Jr. makes the list again. 81-82 season. You don't see Saqlain Mushtaq in there or Arshad Khan. Arshad Khan did get more than 50 wickets, which is not on that list. 1994 and 95, which is the season which actually Saqlain made his debut, but Arshad got 53 wickets in Quaid-e-Azam Trophy. Yeah, I feel for Arshad Bhai and Saki Bhai. They played at a time when the heroes were real fast bowlers. So the art really runs. Two of them. So yes, in my opinion, probably in those 90s, it was the fast bowlers who dominated the cricket. Maybe that could be the reason that we don't see many off-spinners. And then came Sajid Khan. Arshad Khan, 601 wickets, just brilliant. 30 times he's taken 5 wickets and 6 times he's taken 10 for. That is a fantastic career. He was a very underrated bowler. Very, very good. Just happened to be, he came around the same time as Saqlain Mushtaq. Saqlain Mushtaq was the more glamorous because of his dusra. And then we didn't even see Saeed Ajmal on that list. Saeed Ajmal definitely made it to Pakistan and made it to world number 1 in G20 format. The only other off-spinner that I can think of after that, and before Bilal Asif, that's Tahir Khan from Karachi. He almost made it to the Pakistan team. He played for PIA for quite a long time. 324 first-class wickets for Tahir Khan. He's a handy bat as well. Good cricketer. Only one. Sirope. Well done. How good Abdullah Shafiq has been. With the hampered hand, the injury that he sustained while spilling in the slips,
When he came out, his team really was needing a partnership, and he really came good. Not just the runs that he scored, but also the way he did score. I mean, he took the initiative and also helped Tayyip Tahir along as well. 144 for 4. Yeah, a couple of names stands out in this Central Punjab batting lineup. It's Tayyip Tahir, 67, and Abdullah Shafiq on 41. Half-wit Abdullah Shafiq, I would say. 3 wickets coming to Asif. 144 for 4. In a very commanding position, Central at the moment. So if you look at the scenarios from here on where the match is heading, how many runs, more runs can Central Punjab do before they think of declaring and then give themselves an outside chance to bowling Sindh out? That is the real question here. 204 runs at the moment, so maybe add another 100 till 1 hour tomorrow morning and then look to bowl them out. 17 overs left in today's play. I doubt if we'll get all of them, but we probably will get most of them. Maybe about 12 overs. So 12 overs, they go at similar kind of rate. You know, they may add another 50 tonight. But it's important to keep the partnership going, because if Sindh are able to break through, they can see an opening for themselves as well. Mir Hamza back into the attack. Yeah, it's going to be a tricky chase for Sindh. They're already leading by 204, 6 wickets in hand. If you add on at least 50 more runs, that will make 254 runs on the last day. It's not going to be an easy task for Sindh. Not if there is any potential injury to Mir Hamza, because first they need to get all these 6 wickets. But if you look at the wicket, Ali, if you survive the new ball, it's been hard to make inroads. Since experienced bowler has really struggled after that burst with the new ball by all the 3 seamers. Dislodging settled batters have been difficult. Central Punjab doesn't have that luxury as well. Just Muhammad Ali is the impact bowler. The 2 medium pacer, once you see off the new ball, they weren't very effective for Qas Maqsood and Amir Yamin. Still, I would reckon it's 50-50. This game is in the balance. You're a good man calling it balance. I would say it's in Central's hands.